All right. Now my audio, video, everything will be clear, I think. Just 1 second, guys. Let me just confirm that audio, video, everything is clear. Please put down in the comment box if you are able to hear me properly or not. Right now, I think it will be audible. Yeah, perfect. All right. So right now, definitely it will be audible. So let's start off the session. Good evening, good evening, good evening, everyone. How are you people? So, all right. So now today we are going to discuss about, as we had planned, the test and discussion. Okay, perfect, perfect. So my dear students, all of you have written the test of biochemistry. So now when we are looking at a test and discussion, see, when it comes to me, I have a different approach to it. I just don't tell you what is the correct answer, but I would like to explain why it is the correct answer and what are the important facts to be remembered and how will they ask you the same thing in an exam point of view. Okay, so if you have any doubt at any given point of the time, please drop me a message. So if you want me to go completely English, I can do complete English. Hindi English है तो हिंदी English कर सकते हैं. So if you want to ask any doubt, you can ask in any regional language. Pretty much I can manage. Okay, at least, like, few of them. So anyways, with that much being said, bina deri ke, without doing any delay, so let's start with the question discussion. ठीक है बच्चों? All right, चलिए. So let's start with the first question. So first question, when we are speaking of the first question, please, my dear students, let's look at the answer. So which of the following steps in the metabolism of vitamin D requires sunlight? So they are asking, what is the question you need to focus? So vitamin D synthesis will occur. All right. So vitamin D synthesis, already all of you know, you need UV rays, right? So specifically speaking, required are type of UVB radiation, right? So when we are speaking of UVB radiation, so which of the following steps activated by UVB radiation? So to understand that, let's break down the vitamin B formation. So normally, my dear students, vitamin D, I'm sorry if I said B, it is vitamin D. So we have something called as 7-dehydroxycholesterol. We have something called as 7-dehydroxycholesterol, right? So the 7-dehydroxycholesterol is a type of cholesterol which is found where exactly in your skin, my dear students. Where? In the skin. कहाँ पे होता है? Skin. Very good, Mohit Kumar and Dheeraj, you people are absolutely correct. So this 7-hydroxycholesterol will get converted into something called as cholecalciferol. What is that called as? Cholecalciferol, right? So for this conversion only, we require, my dear students, UVB radiation. Very good, very good, very good. You people are absolutely correct. Okay, so this cholecalciferol जो भी बना था, whatever the cholecalciferol which was formed, this cholecalciferol, my dear students, will go to where exactly? It will go to your liver, right? So in the liver, this cholecalciferol will get converted into 25 hydroxy calciferol. 25 hydroxy calciferol. What will be formed? 25 hydroxy calciferol. So this is an active vitamin B3, active vitamin D3 or inactive vitamin D3. It is a inactive. So this fellow will go to your kidney. It will go to your kidney. So again, one more reaction will occur, hydroxylation. So whenever you study about hydroxylation, all of you know it, addition of a hydroxyl group, it will get converted into 1,25 dihydroxy cholecalciferol. So that is only your active vitamin D3. What will it do, bache? What will it do? It will increase the absorption of intestinal calcium. Also, it increase the reabsorption of calcium from the kidney. So the correct answer here only we know that. So from the 7-hydroxy cholesterol to cholecalciferol, as you people already told. Very good. The answer is your B. Answer is B. So what is that? 7-hydroxycholesterol to cholecalciferol. Remember, vitamin D is a type of dependent vitamin upon the cholesterol, my dear bacho. Dependent upon what? Cholesterol. Dependent upon what? Cholesterol. This is a very, very important point to be remembered. So the answer is B.
Okay, so 1 comma 25, no, this is a wrong statement. Statement itself makes no sense. So this process occurs where exactly? The third option, this occurs in the liver bacho, and this occurs in the kidney. So for example, if you have a patient with chronic kidney disease, this is a very important question from medicine as well. So in the chronic kidney disease, which vitamin deficiency can come up? The vitamin deficiency which can come up is vitamin D3. All right, so hope you understood this question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's continue to the next question. This answer is B. If you mark B, it is absolutely correct. If you mark the wrong answer, it's absolutely no problem. So we are learning right now. Okay, let's go to the next question. Okay, so what is this question? Let's look at this. Okay, Menkes disease is due to deficiency of which mineral? Deficiency of which mineral? Okay, the given option to us are either which one? That is zinc, copper, iron and manganese. All of you know that this is due to what is that? Copper deficiency. All of you know what is the answer? Copper deficiency. It is due to copper deficiency. So all of you know this. But when we are speaking of Menkes disease, please understand there are two diseases which will always confuse our students. So I don't want anybody to get confused. There is one disease called Menkes. There is one more disease called as Wilson disease. What is that? Wilson disease. Both of these diseases occurs due to mutation in a gene. What is a gene which is responsible? It is due to ATP gene. What is that? ATP7 gene. So in that ATP7 gene, Wilson disease also again due to ATP7 gene. So the difference here, bacho, remember ATP7A defect will lead to Menkes disease and ATP7B will lead to disease of Wilson disease. Very good. The answer is Mohit. You are absolutely correct. Answer is B. So देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली सो दिस वन एक्चुअली रिमेंबर दिस इज ए X-linked disease बच्चों. What is that? This is a X-linked recessive disease. This is a X-linked recessive disease and this is, my dear students, it is a type of autosomal recessive disease. Okay, so इन दोनों के अंदर very important point to be remembered. नमस्ते, very good evening. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Well, let's continue. What is it? Menkes disease के अंदर क्या होता है? There is a deficiency of copper. There is a deficiency of copper. And here, my dear students, in Wilson disease, there is a copper accumulation. This is a very important point. What is that? Copper accumulation. What is that? Copper accumulation. So copper accumulation occurs where, my dear students? Occurs in the Wilson disease, and this disease has a deficiency of defect of a plasma protein. A very important point. It's a type of plasma protein. There is a defect of deficiency of something called as ceruloplasmin. ये ceruloplasmin और एक जगह पे भी आता है आप लोगों का pathology. When you are studying pathology, it is also a type of inflammatory marker. There also you are going to understand. And here, my dear students, remember, so the patient will have something called as a hepatolenticular degeneration. So what is this hepatolenticular degeneration? Basically, there is a copper accumulation which occurs both in the lentiform nucleus of the brain and the liver. So liver के अंदर when copper accumulates, liver will be destroyed, बच्चे. Liver will be destroyed. That will lead to liver cirrhosis. So Wilson disease will lead to liver cirrhosis. So this is the answer. Iron deficiency leads to anemia. Zinc deficiency हम आगे पढ़ेंगे. Let's continue to the next question. Okay, all right. So let's go to this question. Okay, so the classical galactosemia is due to deficiency of which enzyme? Okay, so I think there is a lag which is occurring. So because of that आप लोगों को क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब आपको आंसर करने तक मेरा एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ होगा. So it doesn't mean that you will not answer. Please keep giving the answer. It's my kind request. Be active. Keep on answering. Why I'll tell you, when you are preparing for an exam, एक rule बना के रखो. Okay, what is that rule, my dear student? Rule is always give answer to a question. वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है. It doesn't matter it is correct or wrong. When you are under the stage of preparation, always give answer to a question. That will improve your, what is that? Yes, improve your learning curve. Why? Because when you make a mistake and if it is corrected by someone, definitely वो दिमाग में रह जाएगा. It will remain in your brain and you will answer correctly. ठीक है? Question is not visible? Sorry.
Okay. Classical galactosemia is due to deficiency of which enzyme? Due to deficiency of which enzyme? I think now it is visible. Just 1 second, my dear students. Let me solve that problem. Question is not being visible. उसको भी हम ठीक कर देते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Okay. So up it will be fine. Right now it will be fine. So classical galactosemia is due to deficiency of which enzyme? So classical galactosemia is due to deficiency of, very good Dr. M. What is the answer? So let's look at the options first. What are the options we have, my dear bacho here? The options we have are aldolase, aldose reductase, okay, galactokinase, very good, galactose 1 phosphate uridyl transferase, very good, UDP galactose 4 epimerase, okay. Now the answer is, very importantly, the answer is galactose 1 phosphate uridyl transferase, okay. Sir, ये कैसा होता है, क्या होता है? No, so many people have this confusion. Sir, हम लोग तो we have been beheading this one. Simply galactosemia, galactose 1 uridyl transferase deficiency, blah blah blah. ऐसा नहीं होता है बच्चों. So quickly let me tell you people, there is one sugar called as galactose. There is one sugar called as galactose. Okay, these galactose, my dear students, will get converted into galactose 1 phosphate. So anywhere if you are adding a phosphate into some other molecule, basically you will take one ATP from the ATP. So चलो अब तो मिल गए, मुलाकात हो गया. So now ATP. Now from the ATP, it will get converted into ADP. So basically ATP से एक phosphate उठा लिए, we taken one phosphate from the ATP, given it to galactose. Automatically the enzyme name is called as galactokinase. What is that? Galactokinase. So kinase is nothing but the enzyme which transfer the phosphate group from one molecule to another molecule. ये याद रखना, एक ही molecule के अंदर नहीं है, within the same molecule. No. From one molecule to another molecule. Then only we'll call it as a kinase enzyme. So galactose 1 phosphate, my dear students. Okay. Now यहाँ पे we will have something called as UDP glucose. We have something called as UDP glucose. So UDP glucose is such a type of glucose for you to remember. Simple as that. It is the glucose which is active for converting into any other stage. Okay, so basically what will happen, this glucose will get converted into glucose 1 phosphate. Okay, and this galactose will get converted into UDP galactose. Basically यहाँ पे ध्यान से देखो, UDP कहाँ गया? UDP went into galactose and phosphate came into glucose. That's it. Okay, so for this transfer of uridyl group, we will require an enzyme galactose uridyl transferase. The answer will be C. Okay, so the answer will be C. Hope everybody is able to understand. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बेसिकली ये यूराडाइल ग्रुप बोलते हैं इसको. क्या को? यूडीपी को. यू कॉल यूडीपी एज ए यूराडाइल ग्रुप. यूराडाइल ग्रुप इफ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर वी विल कॉल इट एज यूराडाइल ट्रांसफरेज. सो द आंसर इज दिस वन ओनली. इसी डिसीज के अंदर गैलेक्टोजेमिया यू आर गोइंग टू गेट वन मोर टाइप ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी क्वेश्चन दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. What is that? Oil drop cataract. Okay, so this is a story of your third question. Let's get to the next question. So please, अगर आप लोगों को if you want me to explain more in Hindi, please do tell me. ऐसा कोई शर्माओ मत प्लीज. अगर सर पूरा हिंदी इंग्लिश चलने के लिए चाहिए तो वो भी बोल दीजिए. ठीक है? Okay. Which of the following is not a function of glucagon? Which of the following is not a function of glucagon? So what is glucagon? What is glucagon? Very good. The oil drop cataract. Okay. So please remember glucagon. Glucagon is a hormone produced by alpha cells of your pancreas. Alpha cells of pancreas. Okay. So exactly what it will do? It will do the opposite of, what is that? Yes, opposite of very important insulin. Opposite of insulin. ये किसका opposite करता है? Insulin. Okay. So अब देखिएगा. Now what will happen? This glucagon
Actually, what will happen? Insulin ka opposite. So what will it do? It will increase. Glucagon will increase the glucose. Glucagon will increase the ग्लूकोज. ठीक है सर. ग्लूकोगन क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ा देता है. Along with glucagon increasing the glucose, glucagon always will also cause. तो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है. ग्लूकोनियोजन. So what is gluconeogenesis? Gluconeogenesis is nothing but formation of glucose from the non-carbohydrates such as amino acids. ठीक है सर. And one more thing, it will also increase breakdown of glycogen. So glycogenolysis. So glycogenolysis होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे ग्लूकोज तो बढ़ेगा ना. ग्लूकोगन का काम क्या है? पीछे तो देखो, यहाँ पे देखो मैं क्या बताया था. यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था. ग्लूकोगन will increase the glucose. So how will it increase the glucose? By gluconeogenesis and by breaking the glycogen. Okay, so it will also cause ketogenesis. Why ketogenesis? जहां पे भी ग्लूकोज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली कीटोजेनेसिस भी हो जाएगा. बट ग्लाइकोलाइसिस is under the influence of insulin. बच्चों, is under the influence of insulin. So the correct answer is glycolysis. The correct answer is glycolysis. Glycolysis is majorly increased by your insulin. याद रखिएगा, आप लोग बायोकेम में पढ़े होंगे ना. Glucokinase and hexokinase has a influence by insulin also. So the answer is glycolysis. Glucagon glycolysis नहीं करवाता है. Glucagon does not do the glycolysis. It just increase the blood glucose. यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे glucose, where exactly? The blood glucose. Okay, blood glucose को बढ़ाता है. ठीक है सब, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? Any doubts? चलिए, I hope you understood this question. So आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next important question. So what is that question? Let's look at this. Okay, a 45-year-old male, okay, 45-year-old male was on a maize as a staple diet. मतलब constantly वो क्या कर रहा था? Maize कर रहा था. What is that? Corn. What is that? Maize. Okay, okay. Diet for what? Prolonged period. He is presented with abdominal pain. Okay, he is having a abdominal pain. Let's write down the complaints. Abdominal pain, loss of appetite, okay, and also diarrhea. Very good. Diarrhea, very nice. Okay, on examination there was a glossitis and pigmented rash on the sun exposed area. मतलब face and etc में क्या होता है? sun exposed area में rash होता है. Rash is telling you it is a type of dermatitis. It's a type of dermatitis. It's a type of dermatitis. Okay, and over his neck there was a, as shown in the below. So the image given was image thoda ud gaya. I'm sorry for that. So image shown was a casal necklace. What was that? Casal necklace. Okay, so kya dikhaya tha? Casal necklace dikhaya tha. So the answer is what? What is a possible diagnosis? So basically whenever you are on a maize diet, maize ke upar continuously diet pe rehte ho, so there is a lack of tryptophan. Lack of tryptophan. What is that? Lack of tryptophan. What is that? Lack of tryptophan. अगर tryptophan नहीं है, if tryptophan is not there, so lack of tryptophan, automatically tryptophan is responsible for the production of one important vitamin, so that will lead to decrease of vitamin B3. Sorry, vitamin B3. Vitamin B3. So what is that vitamin B3? That is only your niacin. What is that? Niacin. So niacin is produced by your vitamin B3 or niacin produced by your amino acid. एक amino acid होता है, कौन है वो? Tryptophan. Tryptophan is not there. Vitamin B3 reduced. Vitamin B3 reduced. So you are going to get a dermatitis, dementia, diarrhea and death. This is called as pellagra, which is also called as 4D disease. बच्चे, very good. 4Ds. What is that? 4Ds. Okay. Scurvy किस चीज की वजह से आता है? Vitamin C deficiency. Megaloblastic anemia is due to, high likely due to, what is that? It is high likely due to deficiency of either B9 or B12, and beriberi आता है B1 deficiencies. Beriberi due to B1 deficiency. Beriberi also has subtypes such as dry beriberi and wet beriberi. ठीक है बच्चों? चलिए, let's go to the next question. Okay. Which of the following has a low glycemic index? एक है sweet corn, okay, sweet corn जो हम लोग मतलब खाते हैं, okay, all right. We have watermelon, papaya and potato.
देखो दिस इज अ डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड थिंग. सो ये इसका आंसर होगा आप लोगों का स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न हैज a low glycemic index among the given option. Among the given option, sweet corn has around less than around 50 about glycemic index, and other things have above 50. So papaya is having a lot of sugar. Watermelon also has a lot of sugar comparatively to the sweet corn. Potato is filled with a lot of carbohydrate. तो आंसर क्या हो गया सर? आंसर हो गया स्वीट कॉर्न. So this is a direct fact based. So among the given options, the lowest glycemic index is for the sweet corn. ठीक है सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये सर ये क्यों दिया? फिर इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है तो व्हाई डिड ही गिव यू? क्योंकि आप लोगों को फंसाना चाहता था और आप लोग वही चाल पे फंस जाएंगे. कौन सी चाल? वो एग्जैक्टली ट्रैप खोल के रखा है. वर्ड, द वर्ड इज स्वीट. सो बाय लुकिंग एट द स्वीट यू थिंक ओ माय गॉड ये बहुत मीठा है. So if it is बहुत मीठा तो glycemic index ज्यादा होगा. So you people are in that thought, but examiner actually put you a trap there. Okay, so ध्यान से देखो, that is your sweet corn. ठीक है जी. All right, then let's go to the next question. A 50-year-old female presented to the OPD after she had undergone a laparoscopic cholecystectomy for cholelithiasis. What is the most common complaint with which she would have presented? Okay, so what is the case here? Post cholecystectomy. Post cholecystectomy. So what is post cholecystectomy का मतलब? What does it mean? Cholecystectomy means removal of gallbladder. Removal of gallbladder. So gallbladder है कि नहीं है? Gallbladder is not there. So if removal of gallbladder, automatically what will happen? No concentration of bile. No concentration of bile. So if there is no concentration of bile, bile का function क्या होता है बच्चों बताओ? बाइल का फंक्शन क्या होता है? वेरी गुड. बाइल का फंक्शन होता है, बेल का नहीं है, बाइल. बाइल ठीक है, बेल अलग होता है, बाइल अलग होता है. ठीक है सर. बाइल, बाइल का फंक्शन होता है नो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल. ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? देयर इज अ लैक ऑफ bile which is coming into the intestine. Bile, B-I-L-E. Okay, so if there is a decreased amount of bile which is coming into the intestine, so but the function of bile is to emulsification of the fat. मतलब fat को break down करके absorb करने में मदद करता है. Bile will help in absorption of the fat by emulsification. So decrease amount of bile, so that will lead to decrease emulsification of fat. Decreased emulsification of fat. So if there is a decreased emulsification of fat, automatically fat का absorption होगा कि नहीं होगा? Lack of fat absorption. So loss of fat, तो मतलब fat absorb नहीं होगा. So जो भी fat content whatever is reason, that will go to into loss of fat into stool. Loss of fat into where? Into the stool. अगर stool के अंदर fat जाएगा, we call this condition as a steatorrhea. What is that? So loss of fat, loss of free fats in the stool. मतलब जो मान के चलिए you had some fat containing food, but that fat will not be absorbed directly to go into the stool. We will call it as a steatorrhea बच्चों. What do we call it as? Steatorrhea. What is that called as? Steatorrhea. Okay, all right. Okay, so that is the story of your, what is that? A story of your 7th question. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. Which of the following is considered as a universal methyl group donor in the biochemical reaction? मतलब बहुत सीधा straight forward question पूछा है. Which of the following donates methyl group? तो मान के चलिए there is some reaction, there is something called methylation. There is something called as methylation. Methylation means what? Addition of methyl group means what is that? Addition of methyl group, addition of CH3. CH3 मतलब methyl group. So methyl group का source भी तो होना चाहिए. We need to get from somewhere. Where do we get the methyl group from? So remember the most important source of methyl group is your SAM बच्चों. What is that? SAM, S-iadenosyl methionine. S-adenosine methionine. Okay, for example, let's take an example. SAM का काम पे रोल होता है. You have your norepinephrine, right? Norepinephrine will get converted into what is that? Epinephrine. इसके लिए होना चाहिए क्या? There should be a methylation. There should be a methylation. Okay, तो ये methylation होने के लिए methyl group को तो जोड़ना ही पड़ेगा.
CH3 को तो जोड़ना ही पड़ेगा. So where do we get the CH3 from? So basically we will have Sam uncle. Who is that? Sam uncle. S adenosyl methionine. ये S adenosyl methionine क्या करता है? He will get converted into S adenosyl homocysteine and ये डोनेट करता है तुम्हारा CH3 मिथाइल ग्रुप. तो मिथाइल ग्रुप कहाँ से आया? सैम से आया. In most of the body's reactions, in all of the places, आपका most important what is that? Yes, that is your methyl group donor in the human body is Sam बच्चों. Who is that? Sam चाचा. ठीक है. कौन चाचा? सैम चाचा. सैम चाचा क्या देता है? मिथाइल ग्रुप. क्या देता है? मिथाइल ग्रुप. सैम चाचा will give you what? मिथाइल ग्रुप. Who is सैम चाचा? सैम चाचा is your S adenosyl methionine. S adenosyl methionine. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. So here we have cholesterol synthesized primarily from. अरे ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन द ह्यूमन बॉडी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज्ड. ये तो एक क्वेश्चन आता है भैया लोकेशन. ये तो पहली क्वेश्चन आता है लोकेशन. इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड? दैट अकर्स इन द लिवर बच्चों. कहां पे होता है? लिवर में होता है. सो बेसिकली फ्रॉम कहां से शुरू होता है? सो रिमेंबर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A will get converted into something called as HMG CoA. इसमें कन्वर्ट होता है HMG coenzyme A. HMG coenzyme A will get converted into mevalonate. Will get converted into mevalonate. अब बच्चों mevalonate क्या होता है? This mevalonate fellow will get converted into cholesterol. What is that? Cholesterol. Okay, so for acetyl CoA to HMG CoA, HMG CoA to mevalonate, ये कन्वर्शन होने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए HMG CoA reductase. HMG CoA reductase. So अब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल. सो प्लीज लिसन टू मी. ध्यान से सुनो. यहाँ पे अब क्या होता है? Many people will tell you na, late night do not eat lot of carbohydrate. Late night do not eat lot of carbohydrate. Why sir? Sir रात को मैंने अगर मान के चलो मैं मतलब I eat lot of carbohydrates in the night, what will happen? So they will tell weight gain हो जाएगा. Sir how will it cause weight gain? अरे रात को ज्यादा खाना खाने से स्पेशली कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा ठूस के खा लिए तो वेट गेन कैसा होगा? ठीक है, तो वो वेट गेन होता है. मान के चलो इफ फॉर एग्जांपल सो HMG CoA reductase जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम एक्टिव इन नाइट. ये रात में ही ज्यादा एक्टिव है. ठीक है, ऐसा चीजें कौन सी है? दिस इज एक्टिव इन द नाइट. अरे भाई तुम वहां मत जाओ. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं. HMG CoA reductase, दिस एंजाइम इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. This enzyme is active during the night. Okay. अब late night lot of sugar, for example lot of sugar खा लिया आपने. Late night को क्या कर लिए? Lot of sugar खा लिए. Lot of sugar means automatically lot of pyruvate. Sugar तो pyruvate में break down हो ही जाएगा. Now this pyruvate will get converted into acetyl CoA. Now this acetyl coenzyme A will enter into कहाँ पे एनर्जी इसमें चले जाएगा? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इसीलिए बोलते हैं लेट नाइट डू नॉट ईट लॉट ऑफ शुगर बिकॉज दैट acetyl CoA रात को जरूरत नहीं होता है. बिकॉज ऑफ विच acetyl CoA विल एंटर इनटू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इसीलिए बोलते हैं रात को ज्यादा शुगर्स मत खाया करो. दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू, सिंस इट इज वेरी मच एक्टिव इन द नाइट, आप लोगों का जो ड्रग्स होते हैं ना स्टैटिन ड्रग्स, द स्टैटिन ड्रग्स आल्सो एडवाइज्ड इन द इवनिंग. ओके, इवनिंग में लेने के लिए बोलते हैं. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो कोलेस्ट्रॉल कहां से सिंथेसाइज होता है? देखो भैया ध्यान से देखो. आप सबको भी तो आंसर पता है. चलो बताओ. ऑलरेडी यू पीपल नो द आंसर. व्हाट इज द आंसर? यस सर, वी ऑलरेडी नो सर. दैट इज योर acetyl coenzyme A बच्चों. व्हाट इज दैट? acetyl coenzyme A. ठीक है. अगर कोई नोट्स लिख रहे हो क्या गाइस? प्लीज टेल मी. अगर कोई नोट्स लिख रहे हो, एनीबॉडी राइटिंग द नोट्स? अरे ये तो बता दो भैया. सर सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता उसके बाद तो बात ही नहीं करना है सर से. चलो भाई पहले तो मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो जाए. मैं वो भी नहीं किया शायद. Okay, so my name is Dr. Maruthi. Who are looking, who are listening to my class for the first time. So, let me introduce myself. I'm Dr. Maruthi. I'm MD resident at Bangalore Medical College and Research Institute. It is a government medical college in Bangalore, and I have been teaching for FMGE, NEET and multiple exams in so many years. अब आप बोल सकते हो कि सर आप इतने मतलब
अपने आप का तारीफ नहीं. Sir, you look young. How many years you have been teaching? I have been teaching for last 7 years. तो all right. So anyways, तो आप लोग अगर नोट्स लिख रहे हो तो लिखना बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुन लीजिए. मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है. जो भी एनोटेटेड नोट्स होगा वो सब मिल जाएगा, ठीक है सर. अब तो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगी, ठीक है. कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए बात करते करते. व्हाट इज अ एंजाइम, व्हाट इज अ सब्सटेंस, असिटाइल कोई. असिटाइल कोई के अंदर कितना कार्बन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कार्बन. कितना तो होते हैं, 2 कार्बन होता है. हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर, 2 कार्बन्स विल बी देयर. ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आगे बढ़ते हैं. अरे ये लैग होता है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है यार. एक बार 30-40 सेकंड फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक हो सकता है शायद. चलो. A 5-year young boy presented with fissured tongue, okay, lips and lesions in the angles of the mouth. भैया यहाँ पे आंसर आ गया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखो. व्हाट इज दैट? On the angles of the mouth he is having what? Lesions. So in the mouth angles of the mouth मतलब दोनों ओठ, ओके, दोनों लिप्स यहाँ पे जोड़ते हैं ना. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ द माउथ. इन बोथ ऑफ द एंगल्स ऑफ द माउथ देयर इज अ लेशन. दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ समथिंग कॉल्ड एज chiliosis. What is that? Chiliosis. What is that? Chiliosis. And also he had low blood level glutathione reductase activity. What is that? Glutathione reductase activity. Okay, low RBC. अरे BC नहीं भाई, low RBC glutathione reductase activity. So अगर ग्लूटाथायोन एक्टिविटी भी रिड्यूस हो गया तो विच विटामिन डेफिशिएंट? द आंसर इज डायरेक्टली याद रखो, राइबोफ्लाविन. तो राइबोफ्लाविन सर कैसे हम डिकोड करें? 2 चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों. व्हाट इज दैट? वन इज your chiliosis. So chiliosis is also called as angular stomatitis. ठीक है, angular stomatitis. अगर पिक्चर के अंदर कोई लड़की का वोट दे दिया तो आप भाई को मत जाना. यहाँ पे ध्यान से देखो. इफ दे आर फोकस्ड ओनली ऑन द लिप्स, आप लोग कहाँ देखना है? एंगल्स पे देखना है, ठीक है. एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ओके, एंगुलर स्टोमेटाइटिस. अगर एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज देयर, दैट इज सजेस्टिव ऑफ राइबोफ्लाविन. अब ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेस का क्या बकवास आ गया सर? कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लूटाथियोन. We have something called as glutathione. ये काम पे होता है. ये ग्लूटाथायोन बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे सर ग्लूटाथायोन इंजेक्शन. अरे भाई ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से पहले ध्यान से देखो, इट इज प्रेजेंट इनसाइड योर आरबीसी. काम पे होता है आरबीसी में, ठीक है. अब सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, और भी इंपॉर्टेंस है. ग्लूटाथायोन इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी विच इज प्रेजेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द फ्री रेडिकल. सो this glutathione, my dear students, what will happen? This glutathione undergoes a something called as reduction reaction. बच्चों, what is that? Reduction reaction. ये reduction होने के लिए हमें एक we require an enzyme called as a glutathione reductase. What is the name of the enzyme? Glutathione reductase. So we will have reduced glutathione. We will have, what is that? Reduced glutathione. Okay, now for this purpose only आप लोगों को क्या चाहिए होता है? We will have something called as NADPH. We will have something called NADPH. सर ये NADPH कहाँ से आता है? एक एंजाइम होता है from a G6PD, glucose 6 phosphate dehydrogenase. सर ये एंजाइम कौन सी पाथवे में होता है? In which pathway? It is present बच्चों in the HMP pathway. What is that? HMP shunt. It is also called as hexose monos phosphate pathway or also called as pentose phosphate pathway. ये NADPH क्या किस में कन्वर्ट होता है? NADP में कन्वर्ट होता है. ओके, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? दे दिया, डोनेट कर दिया. किसको? ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन कैसा था? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. Okay, now this reduced glutathione बच्चों will get converted into something called as oxidized glutathione with the help of an enzyme called as peroxidase. What is the name of the enzyme? Peroxidase. Sir ये किस लिए काम आया? So this during this peroxidase का काम, when peroxidase is working, ये peroxidation करने के लिए, to do this reaction of peroxidation, it will utilize H2O2.
It will utilize H2O2. So this H2O2 will get converted into water. So it is a very dangerous substance for our body. What is the dangerous substance? H2O2. What is that? H2O2. What is that? H2O2. H2O2 will get converted into H2O because H2O2 is a free radical. उसको निकालने के लिए our body is doing all this circus. So इसलिए NADPH नहीं है तो ये पूरा रिएक्शन नहीं होगा. So अगर NADPH चाहिए तो G6PD चाहिए. Okay, so let's break it down. अगर G6PD नहीं है, if there is no G6PD, no NADPH. If no NADPH, no glutathione reduction. If there is no glutathione reduction, no peroxidation, so H2O2 क्या होगा? बढ़ जाएगा, leading to hemolysis. इसी को you call it as a G6PD deficiency. You call it as what बच्चे? G6PD deficiency. Sir, इससे और vitamin B2 riboflavin से क्या लेन देन है? What does it have to do with riboflavin? So this glutathione reductase का कोएंजाइम होता है vitamin B2. इसका साथी कौन होता है? कोएंजाइम is vitamin B2. That is your riboflavin, my dear students. What is that? Riboflavin. So that is why glutathione reductase activities had been changed. Okay. All right. So with this much being said, G6PD भी हमने समझ लिया और glutathione reductase भी समझ लिया. How does glutathione works we understood. Peroxidase का काम क्या होता है we understood. And riboflavin का क्या रोल है also we understood. And अगर angular stomatitis without anything, सिर्फ angular stomatitis with a vitamin deficiency, if they have asked, the answer is very clear बच्चों. The answer is your angular stomatitis caused by riboflavin. Okay. So this is the story of your 10th question. Let's go to the next question. Vitamin K supplementation will help the neonate from suffering from which one? Okay, so neonate ko from which one it will protect? So very simple, vitamin K supplementation will prevent from what? Okay, एक बार देखते हैं. So we have, my dear students, we have something called as clotting factors. So we have clotting factors called as precursor factor. Precursor stage में होता है बच्चों. किसमें होता है? Precursor stage में. Precursor stage में कौन होता है? 2, 7, 9, 10. Okay, देखो 2, 7, 9, 10. ये 2, 7, 9, 10 precursors will get converted, my dear students, into inactive 2, 7, 9, 10. मतलब वो अभी काम नहीं कर रहा है. They are just waiting. Okay. For example, if there is a injury, अगर injury हो जाता है, now my dear students, they will become active. ओके तो क्या होता है? टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग. मतलब फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. एंड क्योंकि 9, 7, 9, 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. 2, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. 2, 7, 9, 10 इज बिकॉज ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर एंड 3, 7, 9, 10 आर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स. ठीक है सर, चलिए. सो ये प्रिकसर से इसमें कन्वर्ट होने के लिए वी विल रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज गामा कार्बोक्सिलेशन. Gamma carboxylation. Okay, so this gamma carboxylation will require vitamin K in a form called as epoxide form. So this epoxide will undergo reduction. So vitamin K we will have in a reduced form. So we will have reduced vitamin K. So up to 7, 9, 10 बनने के लिए what is required? Gamma carboxylation. Gamma carboxylation होने के लिए what is required? Vitamin K. So if vitamin K is not there, if there is no vitamin K, 2, 7, 9, 10 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? हाँ सर, नहीं बनेगा. अगर 2, 7, 9, 10 is not there, inactive 2, 7, 9, 10 will it be there sir? नहीं होगा. If inactive 2, 7, 9, 10 is not there, so they will not become active during the injury. So bleeding नहीं रुकेगा. So if 2, 7, 9, 10 is not their factors, clotting factor, the person will have a high tendency to bleed, and all of them are dependent on vitamin K. किस पे dependent होता है? Vitamin K. So if at all, if you don't give vitamin K to any unit, 2, 7, 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ बच्चों. हाँ, नहीं बनेगा. If there is no formation of 2, 7, 9, 10, automatically baby will have a high chances of developing hemorrhagic disease of the newborn. क्या बनता है? Hemorrhagic disease of the newborn. तो the answer is going to be hemorrhagic disease of the newborn. So उसको prevent करने के लिए for every newborn we give vitamin K after birth. We will give vitamin K after birth. Hope everybody able to understand. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? At least let me know that one. या आप लोग डिसाइड कर रखे कि सर हमें कुछ कमेंट नहीं करना है, बस सुन के चले जाना है, ऐसा कुछ है क्या?
I hope everybody able to understand. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बता दो. Let's continue. Okay. Okay, let's go to the next one. The subcellular organelle which is associated with killing of viruses and bacteria is. Okay, let's see. जो ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के साथ एंड वायरस के साथ पंच मार रहा है, ठीक है. So he is killing bacteria and virus. Who is that person? Let's see. Okay, so Bhuwana says the answer is D. Peroxisome, mitochondria, Golgi apparatus and lysosome. देखते हैं peroxisome का function क्या है. Peroxisome basically removes free radical. Peroxisomes help in removes free radical. Oxygen free oxygen species होते हैं ना, वो danger होते हैं. ये जो भाई देखो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, ये फ्री रेडिकल जो होते हैं प्ले बाय टाइप से, ओके, किसी के साथ भी जाके चिपक लेते हैं. प्रोटीन दिख गया, अरे बेबी ऐसे जाके बात कर ले. व्हाइट टाइप, अगर फॉर एग्जांपल लिपिड दिख गया, अरे कैसे हो. अगर कार्बोहाइड्रेट दिख गया, चलो भाई बात कर. So he will start to interact with everyone. So that free radicals are dangerous for the body. So that is why in our body we have antioxidant ठीक है. antioxidant which removes what, which removes the free radical. So free radical remove करने में मदद करता है, removes free radicals, that is done by your peroxisome. ठीक है, चलो. So Bhuwana says it is a suicide bag of cell, that is lysosome. Absolutely correct. Mitochondria तो आप सबको पता है, it is responsible for energy. Golgi apparatus usually responsible for protein synthesis. Okay, protein synthesis. So we are left out with what? Lysosome. So the lysosome, my dear students, it has some enzymes. What is that? Enzymes. Okay, so these enzymes are responsible for what is that? These consist of enzymes such as proteolytic enzymes. Okay, so proteolytic enzyme, for example. Okay, ये सिर्फ प्रोटियोलाइटिक नहीं है, मल्टीपल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सच एज प्रोटियोलाइटिक. चलो लिख लेते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. व्हाट विल दे डू? दे विल किल द सेल्स आल्सो, दे विल किल द बैक्टीरिया आल्सो. सो द आंसर इज लाइसोसोम बच्चों. द आंसर इज डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो. ये वेजिटेरियन, ये कोई मेरा दोस्त है. ओके, ऑलराइट. A vegetarian patient presents with a anemia and hypersegmented neutrophil. What is the most probable diagnosis? अरे इतना आसान क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो. Okay, so he's a vegetarian. Vegetarian means automatically no meat. So no meat means there is a due to lack of meat के. So if vegetarian के अंदर lack of possibility, lack of which vitamin? B12 sir. There is a possibility a lack of B12. So B12 का lack होगा and B12 का lack होगा तो क्या हो जाएगा? megaloblastic anemia आएगा. What will be there? megaloblastic anemia आ जाएगा. So megaloblastic anemia के अंदर ये भी याद रखो, hypersegmented neutrophil is a sign of megaloblastic anemia. Okay, so megaloblastic anemia के अंदर if you consider this is a neutrophil, inside the neutrophil का nucleus will look something like this. It will have segments. Okay, usually 4 to 5 segments होते हैं. Normally there will be 4 to 5 segments. Rather than 4 to 5, there will be more number of segments like this. So if more segments are there, this is a hypersegmented neutrophil. So if hypersegmented neutrophil is there, this is a megaloblastic anemia, usually due to both B9 and B12. दोनों cause करवा सकता है, but among which we have a quick clue here. Vegetarian. The answer is B12 deficiency, megaloblastic anemia. Anemia of chronic disease किस लिए होता है? Anemia of chronic disease, body has a chronic inflammation. Because of that, interleukins are released. क्या होता है? Inflammatory mediators like interleukin. Because of this interleukin release, what will happen? Anemia of chronic disease में, so there is a molecule that is only called as hepcidin. Okay, hepcidin comes from where? Liver. कहाँ से आता है? Liver से आता है. Liver से आके करेगा क्या? ओ भैया रुक जा, किसको बोलेगा? आयरन को. Remember, anemia of chronic disease is a type of iron deficiency only. But hepcidin inhibit iron absorption. Okay,
absorption. So if there is an inhibition of iron absorption, automatically patient will get anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease. Okay, so when we are speaking of anemia of chronic disease, ये दोनों को बहुत कंफ्यूज होते बच्चे लोग, और एवरी टाइम एग्जामिनर नोस वेरी वेल कैसा ट्रैप करना है. ठीक है, सो आई डोंट वांट, सिंस दो इट इज नॉट ए बायोकेमिस्ट्री, मैं ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए. तो अनेमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज के अंदर, इसमें अंदर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ टीआईबीसी. ये बात याद रखना, बस इतना ही पॉइंट याद रखो. व्हाट इज दैट? डिक्रीज ऑफ टीआईबीसी. ओके, एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देयर इज ए इंक्रीज ऑफ टीआईबीसी. ये दोनों देख के आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. ओके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी. Okay, so that is a story of your, what is that? That is a story of your, that is a story of your 13th question. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. Which of the following cycle is not present in the muscle? Okay, muscle के अंदर कौन सी नहीं होता है? ठीक है, देखते हैं. What are the options? Glycogenolysis. अरे glycogen is stored in the liver and muscle. Automatically glycogenolysis will occur in the muscle. Okay, मतलब glycogen is stored inside the muscle, it will occur. Ketogenesis मतलब acetyl CoA बनना, वो तो हर जगह बनता है. Glycogenesis, yes, it will also, glycogen synthesis will also occur in the muscle. अरे ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे lipolysis, lipolysis कहाँ पे होता है? Lipolysis occurs in the adipose tissue. सीधी बात, कहाँ पे होता है? Adipose tissue. Answer is D. Answer is D. Okay, so this is the story of your, what is that? That is your 14th question. Okay, hope everybody clear so far. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next important point. What is that question? Let's see. A 65-year-old male has bruising under the eyes. Which of the following vitamin deficiency leads to easy bruising and bleeding gums? आप लोग तो bleeding gums में तो bleeding heart बन जाओगे. वाह, bleeding gums दिख गया तो vitamin C, right? So you are absolutely correct. The answer here in the previous question, lipolysis does not occur. You are absolutely correct, Bona. And here in the 15th question, so what is the answer? Let's see. Bleeding gums hota hai, so what will be there? So the answer is the first and most important. So bleeding gums and rashes, that is a symptom of, my dear students, scurvy. What is that? Scurvy. Scurvy occurs due to what? Deficiency of which vitamin? Deficiency of vitamin C. Deficiency of vitamin C. So deficiency of vitamin C की वजह से क्या होता है? Vitamin C का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर? बहुत लोग क्या, स्कर्वी ब्लीडिंग गम, स्कर्वी ब्लीडिंग गम. मेरे जैसे एग्जामिनर हो तो गूगली बार डालेंगे, क्या हो जाएगा? ना स्कर्वी दिखेगा ना ब्लीडिंग गम दिखेगा, फिर भी स्कर्वी का ही क्वेश्चन होगा. तो वो कैसा होगा? So remember, deficiency in vitamin C will lead to what? Defect of collagen. Defect of collagen. Sir, why collagen का defect? Because जब कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन. कोलेजन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन. अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दिस कोलेजन व्हाटएवर इज देयर बच्चों, दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्लीज लिसन टू मी, दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन रिक्वायर्स पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. सो विटामिन सी एक्चुअली करता है क्या है? इन ए नॉर्मल कोलेजन के अंदर इट विल कॉज समथिंग कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्सिलेशन. व्हाट इज दैट? Hydroxylation of two amino acids after collagen formation. Okay, क्या है? Hydroxylation of your, what is that? Hydroxylation of proline and lysine. याद रखो, what is that? Proline and lysine. Proline and lysine, जिसके वजह से ये आता है, एक क्वेश्चन आता है, प्रोलिन. प्रोलिन किस में बनेगा? हाइड्रोक्सी प्रोलिन. ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन. ये भी एक एमसीक्यू है बच्चों, ध्यान से सुनो. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. हाइड्रोक्सी प्रोलिन को आप लोग करते, व्हाट डू यू कॉल इट एज? इट इज कॉल्ड एज derived amino acid. This is also a important question. Okay, so derived amino acid is your hydroxyproline. चलिए, so basically vitamin C does hydroxylation of proline and lysine. कहाँ पे? in collagen. in collagen. बस काम करता. अब विटामिन सी नहीं है, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं बनेगा, सो डिफेक्ट ऑफ कोलेजन हो जाएगा. Defect of collagen. So especially collagen is present in the capillaries. Capillaries present all over the body, especially in the skin, gums and all. So because of which, what can be there? Bleeding gums. Along with bleeding gums, the patient can also have skin rash. Patient can also have skin rash, and later also in children, scurvy will also manifest as a bone defects also. ठीक है, याद रखो, bone defects ये भी आता है.
ठीक है. So this is the story of your vitamin C बच्चे. Answer is D done. Okay, चलिए let's go to the next question. Okay, so which of the following enzyme is deficient in Van Geek's disease? Van Geek's disease. अरे बहुत simple है. Van Geek's disease. What is this? It is a type of, my dear बच्चों, yes, it is a glycogen storage disease. What is that? Glycogen storage disease. Glycogen storage disease. So basically this glycogen storage disease किस लिए होता है? So this is a glycogen storage disease. This is the your type 1 बच्चों. It is your type 1. Type 1 is Van Geek's disease. It occurs as a result of, all of you very well remembered. The answer is your A. Very good answer. The answer is glucose 6 phosphatase deficiency. Type 1 is due to deficiency of glucose 6 phosphatase deficiency. Okay, the next one, type 2, is called as Pompey's disease. क्या बोलते हो? Pompey's disease. Pompey's disease is as a result of deficiency of acid maltase. कौन से होता है? Acid maltase. इसके अंदर ज्यादा तरीके में मसल्स इन्वॉल्व होता है. बच्चों के अंदर डिस्टोनिया आता है बच्चों. What will be there? The children will have dystonia. Okay, and also remember टाइप 3, व्हाट इज दैट? ये कैसा याद रखे सर? ए बी सी डी, ऐसा रखो, ए बी सी डी. ओके, सी फॉर, तीसरा लेटर अल्फाबेट कौन है? सी. सी फॉर कोरिस. कोरिस इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी. ब्रांचिंग एंजाइम. ओके, सी हो गया डी के साथ. ये को मिला देते किसके साथ? बी के साथ. वी हैव एंडरसन. वी हैव एंडरसन. एंडरसन. Anderson is your type 4 collagen disease that is due to sorry, थोड़ा गलती हो गया. This is a debranching enzyme deficiency. This is a debranching. Coris is due to debranching deficiency. I'm sorry, I said it correct, but I wrote it wrong. Coris is due to debranching deficiency. Anderson is due to branching. A for Anderson, B for branching enzyme deficiency. Okay, then we have one more important disease called as McArdle's, and also your Hers disease. तो हर्स, मैकआर्डल्स एंड हर्स दोनों में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी होता है. फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी. बट एम फॉर मैकआर्डल्स, रिमेंबर इन द मसल. कहां पे होता है? मसल के अंदर डेफिशिएंसी होता है. हर्स डिसीज के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, बट आपको अकर्स इन द लिवर. तो याद रखो, H फॉर हर्स, H फॉर हेपेटिक, H फॉर हेपेटिक. ओके, सो टोटली 6-7 टाइप के होता है. 7वां होता है दैट इज योर टाउरीज डिसीज बच्चों. दैट इज योर टाउरीज डिसीज. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी. Glycogen phosphorylase deficiency and also all the glycogen storage diseases. अब ये सर this time they didn't ask question, but most of the exams बच्चों ध्यान देना यहाँ पे. like you are looking out of any exam. Okay, look at NEET, look at INACET, FMGE. हर जगह पे there is a 90% probability that this one question can be asked from the 6 diseases. This is a very commonly asked question. कभी हो सकता है कि skip कर दिया examiner, but most of the time it is a asked question. ठीक है बच्चों? All right, let's go to the next question. Melanin is derived from which amino acid? We have options like tyrosine, arginine, lysine and tryptophan. What is the answer? So let's look at melanin. Okay, so melanin कहाँ से आता है? melanin. Okay, कौन है? melanin. melanin आता कहाँ से है? melanocyte. Comes from where? melanocyte. And this is also a very confusing question and very frequently asked question. So tyrosine और tryptophan के अंदर confuse होता है करके melanin and melatonin को confuse करा देगा. So we have melanin. Melanin is coming from where? tyrosine. Melanin is coming from where? tyrosine. So this tyrosine, we have an enzyme called as tyrosinase. What is the name of the enzyme? tyrosinase. Tyrosinase बनाता है आपको melanin. अगर tyrosinase, if there is a deficiency, अगर क्या हो गया? deficiency of tyrosinase, then we will have a disease called as albinism. What is the name of the disease? albinism.
ठीक है बच्चों. So tyrosinase deficiency will lead to albinism. Tyrosin से बनता है melanin. So tyrosin से already you know melanin. Apart from melanin, you have your adrenaline and noradrenaline which comes, and also your T3 and T4 which comes from where? Tyrosin only. Okay. और एक protein होता है. There is a protein called glycogen in it. Tyrosin also an amino acid which plays a very important role in a protein called as glycogenin protein. कौन सी protein? Glycogenin. डन सर, समझ में आ गया? अंडरस्टूड. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अर्जिनिन. अर्जिनिन प्लेस ए रोल इन यूरिया साइकिल. इट प्लेस ए रोल इन सिंथेसिस ऑफ एनओ. इट प्लेस ए रोल इन सिंथेसिस ऑफ एनओ एंड इट आल्सो प्लेस ए रोल इन द सिंथेसिस ऑफ वासोप्रेसिन. एंड ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? पहले तो करेक्ट आंसर मार्क कर लेते हैं. टायरोसिन. ट्रिप्टोफैन से बनता है योर विटामिन B3, दैट इज योर नायासिन, एंड आल्सो योर सेरोटोनिन. कौन सी बनता है? सेरोटोनिन. सेरोटोनिन को ही बोलते हो 5-HT. 5-HT. 5-HT का मतलब क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन. ओके, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन. ओके, ये भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि सब लोग क्या कर देते पता है? ऑल ऑफ यू विल टेल 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन. एग्जामिनर आल्सो नोस दैट यू विल टेल, तो वो क्या कर देगा? 5-HT का फुल फॉर्म बताओ. 5-HT का फुल फॉर्म होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, नॉट ट्रिप्टोफैन बच्चे. ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So you want me to increase the speed, or I hope everything is fine? I think a patient from suffering from sickle cell anemia. Very important question. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. In the sickle cell anemia, what is the mutation? Okay. So sickle cell anemia, the type of hemoglobin you are going to find is HbS bacho. Sickle hemoglobin. Sickled hemoglobin. So this sickled hemoglobin is also called as a sticky hemoglobin, which is also called as sticky hemoglobin. Sticky hemoglobin. The sickle cell anemia occurs due to something called as point mutation. Occurs due to point mutation. Point mutation. So what is that point mutation? So that point mutation, glutamate replaced by valine. Glutamate replaced by glutamate. Glutamate replaces valine. Okay. Glutamate is replaced by valine. Glutamate replaced by valine. Glutamate is replaced by valine. Okay. All right. Yes, melatonin also comes from your tryptophan. Yes, sir. Glutamate is replaced by valine. On which chain replaced by valine? On beta chain of the hemoglobin at the 6th position. So glutamate replaces by valine. Glutamate replaces by valine, or glutamate replaced by valine. Okay. So glutamate, the answer is glutamate is replaced by. Actually, it should be replaced by your valine, that is in the 6th position. The answer is C, sickle cell anemia. Okay. All right. तो आप लोग previous question का आंसर दे रहे हो. I think I'm going into the next question. So the answer is, that is glutamine replaced by valine at a 6th position. On which chain? Beta chain of the hemoglobin. Let's go to the next question. Which of the following pathways occurs only in the cytoplasm? मतलब which pathway occurs only in the cytoplasm of the cell? Beta oxidation. Beta oxidation तो क्या होता है? Start in cytoplasm. And beta oxidation ends in mitochondria. Starts in actually where? Yes, starts in your cytoplasm, ends in mitochondria. मतलब in the cytoplasm एक process होता है initiation and transportation. That initiation and transportation occurs in the very importantly cytoplasm. उसके बाद mitochondria के अंदर very important word beta oxidation proper बोलते हैं उसको. What is that called? Beta oxidation proper. So beta oxidation proper occurs in the mitochondria. Okay. Tricyclic acid cycle are also called as Krebs cycle. ये पूरा completely it occurs in the mitochondrion. Okay. Mitochondria. Okay. DNA synthesis तो होता है nucleus में, and you are left with glycolysis. Glycolysis occurs only and only in the cytoplasm. Occurs only in the cytoplasm.
Okay, so remember the answer is bacho glycolysis. Glycolysis occurs where bacho? Occurs in the cytoplasm only, and other cycles occurs in both cytoplasm, mitochondria, or maybe in the nucleus. Even your urea cycle, अगर ऑप्शन में यूरिया साइकिल भी दिया होता वो भी सही आंसर नहीं होता है, because यूरिया साइकिल starts in mitochondria, ends in cytoplasm. ठीक है, so the answer is glycolysis. ठीक है, चलिए. Let's go to the next question. A diabetic patient present with development of cataract, what substance will be deposited in this case? Diabetic patient with a cataract. Wow. Okay. So this is a classic case of what is that? Diabetic retinopathy or microangiopathy. Remember, diabetic cataract is due to microangiopathy. Microangiopathy. One of these things is microangiopathy. तो चलिए देखते हैं होता क्या है. In a patient with diabetes mellitus, there is a high amount of glucose. High amount of क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है उसके ब्लड के अंदर. So this high amount of glucose will get converted into something called as sorbitol. बच्चों, it will get converted into sorbitol क्योंकि glucose is not utilized by the cell, तो extra glucose enters into the alternate pathways such as sorbitol pathway. Okay, what is that sorbitol pathway? So this sorbitol, under the influence of one thing called as sorbitol dehydrogenase, it will get converted even into fructose, which it will get converted into fructose. So because of this conversion, sorbitol and fructose will start to deposit in the eye. वो deposit होके क्या कर देगा? Cataract करा देगा. So the answer will be your sorbitol and fructose. Okay, sorbitol and fructose. Hope everybody able to understand. All right, chalo, let's go to the next question. Nitric oxide is formed from which amino acid? Just now I told you people. So we have smooth muscle cell. We have a smooth muscle cell. In the smooth muscle cell, nitric oxide produce होता है. Nitric oxide का काम क्या है? Nitric oxide causes relaxation of the smooth muscle. So basically we have an amino acid called as arginine. We have an amino acid called as arginine under the influence of an enzyme called as NO synthase, nitric oxide synthase. It will form NO. This NO will go and activate an enzyme called as guanyl cyclase. This guanyl cyclase will activate something called as CGMP. ये CGMP क्या करता है? It will relax the smooth muscle. It relax the smooth muscle. याद रखो, it relax the smooth muscle. So ये बहुत important क्वेश्चन है. They have asked previously. NO का secondary messenger भी पूछा गया CGMP, and arginine से कौन बनता है? NO. So the answer is NO. So the answer is NO synthesized from arginine. Arginine also forms urea. It also plays a role in the urea cycle. And also, my dear students, arginine will play a role majorly in one more place. What is that location? So remember, it also plays a role in the vasopressin production. What is that? Vasopressin production. Okay? So this is the story of your, what is that? Story of your, very importantly, that is your NO and arginine. Okay? So let's go to the next question. So before going to the next question, I would like to ask you people, hope you are able to understand. अगर मेरा कोई बोलने का तरीका, if you're not able to understand my accent or something, please do let me know. Let's continue. Chal. 22 question. A COVID patient was recovering at home after he was discharged from hospital. Okay. In order to join back his duties, he himself starting taking excessive multivitamin supplements. He developed symptoms of nerve sensation, tingling sensation. Which of the following most likely causes this disease? Okay. So basically the patient is taking multivitamin supply on his own only. Multivitamin supply on his own. After that he is developing, what is that? Nerve sensation and tingling sensation. So basically symptoms of neuropathy. Okay, so symptoms of neuropathy, and he is already taking, so deficiency होने का possibility तो नहीं है. So there is the only possibility is excessive of vitamin. तो excessive कौन सी vitamin हो सकता है? Which vitamin could be excessive? Okay, so let's look at the answer. Vitamin D excess. Remember, vitamin D excess will not have a nerve related symptoms.
B12 excess. B12 excess usually causes diarrhea, excessive diarrhea. Okay, excessive diarrhea and very non-specific symptoms such as headache, nausea. But only vitamin, that is B6, vitamin B6 excess will cause neurological symptoms. So remember, B6 is a very special vitamin. B6 deficiency and also B6 excess. B6 excess, both of them, my dear students, will have same symptoms. क्या होता है? डिट्टो के डिट्टो, एक ही तरीके का symptoms होता है. Both hypo and hypervitaminosis of B6 will have the same symptom. Sir, तो फिर हमें कैसा पता चलेगा? For example, if they tell you the patient is taking isoniazid, isoniazid causes deficiency of B6. A patient is alcoholic, causes deficiency of vitamin B6. A patient is taking excessive vitamin supplement, it is a excessive hypervitaminosis. So this is the story of your excessive of vitamin B6. Okay, let's go to the next question. Which of the following enzyme is simultaneously incorporates the molecular oxygen? So basically this is a question from electron transport chain. In the electron transport chain, they are asking which enzyme incorporates molecular O2. Which enzyme incorporates molecular O2? So this is a direct fact-based question. So that is done by your complex 4. That is done by your complex 4. Who is that complex 4? Cytochrome C or cytochrome C oxidase. The answer is cytochrome C oxidase, which is a complex 4. So which incorporates the oxygen. This is a fact to be remembered from the electron transport chain. चलिए ठीक है, तो हम लोग आधा रास्ते पहुंच गए. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम इज, मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि प्लाज्मा के अंदर विच एंजाइम इज प्रेजेंट. व्हाट इज आस्किंग? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. तो क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंजाइम एक्टिव होता है. ओके, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, so amylase is there, amino transferases are there, lactate dehydrogenase and lipoprotein lipase. तो चलो रूल आउट करते हैं, हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं. अरे आई मीन लेट्स गो फ्रॉम ऑप्शन डी टू ऑप्शन ए. ठीक है, बिकॉज आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल ऑफ यू नो दैट. तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब अदर चीज को डिस्कस कराना चाहता हूँ. ओके, lactate dehydrogenase, remember it is present in the muscles. एंड ऑल्सो LDH1, बच्चों इसके अंदर एक सब टाइप होता है LDH1, ये स्पेसिफिकली हार्ट के अंदर होता है. कहां पे होता है? वेयर इट विल बी प्रेजेंट? दिल में. तो पहला प्रायोरिटी टू द दिल. सो द LDH1 इज आल्सो लोकेटेड इन द हार्ट. ओके सर. अमाइनो ट्रांसफरेसेस सुने होंगे ना, SGOT, SGPT, ALT, AST, alanine amino transferase and aspartate amino transferase, ALT, AST. ये दोनों काम पे होता है? लिवर में होता है. they are located in the liver. so जब दारू ज्यादा पिया जाएगा, if a person drinks a lot of alcohol, what will happen? the liver enzymes will increase because of the liver cell destruction. amylase कहाँ से आता है भैया? amylase is responsible for the digestion of carbohydrate, which is coming from pancreas. Okay, so remember, in the plasma, the enzyme which is highly actively present in, that is your lipoprotein lipase, actually it is present in the endothelial cell. endothelial cells के अंदर होता है. it is present in the endothelial cell, which sometimes it can digest chylomicron. इसको digest करता है, digest cholesterol. CH मतलब cholesterol and triglycerides, mainly triglycerides. From where? Yes sir, from your chylomicron. कहाँ से? chylomicron से इसको डाइजेस्ट कराता है, chylomicron से डाइजेस्ट करता है. Who is that? That is lipoprotein lipase. अगर कोलेस्ट्रॉल हम भूल भी जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, याद रखो triglycerides. Most importantly triglycerides. Okay, hope everybody able to follow this question. Let's go to the next important question. That's your 25th question. So which of the following intermediates of metabolism can be both precursor and product of glucose? मतलब क्या पूछना चाहता है? What he is asking? So there is something we have called glucose. Okay, ये क्या पूछना चाहता है? ग्लूकोज से कोई ऐसा X चीज बन रहा है. तुम्हारा X नहीं है भैया, I am randomly taking the alphabet X, and इसी चीज से वापस ग्लूकोज भी बन सकता है. Which is that substance? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है. लेट्स लुक एट द ऑप्शन. लैक्टेट, पाइरुवेट, एलानिन, एसिटाइल कोएंजाइम.
lactate, pyruvate, alanine coenzyme. Okay, so remember, please remember these pyruvate and lactate, okay. So it can be both precursor and a product of glucose. So the answer is, better answer my dear bacho, is pyruvate. The better answer is pyruvate. Okay, so actually better answer is pyruvate, क्योंकि पायरुवेट फिर से लैक्टेट में बन के लैक्टेट से फिर से आ जाता है किसमें, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, दैट इज योर, व्हाट इज दैट इज योर कोरिस साइकिल. बट ग्लूकोज एलेनिन साइकिल में डायरेक्टली पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो बेटर आंसर इज पायरुवेट बच्चा. आंसर क्या हो सकता है, पायरुवेट. तो पायरुवेट से ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन सकता है. बेस्ट आंसर इज, ठीक है. So we are done with the 25 questions. So once we are done with the 25 question, let's go to the next important question. What is that? So that is your 26th question. So let me open up the new page where I have already like added your question. बस तो चलिए डिस्कस करते हैं. Actually the second half is even more interesting. तो आप लोग क्या हो गए, इतना इनएक्टिव हो गए, व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, या बोरिंग हो गया, या मजा नहीं आ रहा है, क्या चल क्या रहा है, इतना इनएक्टिव हो. Which of the following intermediate metabolism can be both precursor and, okay, that is done. 25th question. Let's go to the 26th question. ठीक है बच्चों. If what a 4-month old infant is seen by the doctor for the failure to thrive. Okay, examination shows hepatosplenomegaly. चलो ये देखो भैया, liver and spleen are बढ़ गए, enlarged. Liver and spleen are enlarged. Lab results show elevated transaminases. Transaminases मतलब that is a increased level of ALT and AST. ALT and AST. So that is suggesting of liver injury. That is suggesting of liver injury. Okay, and also bilirubin. Okay, the boy shortly dies thereafter. Oh my God. Okay, autopsy कर लिए. So the glycogen was found throughout the liver. So what is there? Glycogen is stored inside the liver. The boy must had a deficiency of which enzyme. ठीक है, तो ये देखो liver मान के चलते हैं. Consider this is a liver. So in the liver what was stored, देखो आपको क्या मिला था, glycogen. In the liver what was there, glycogen. So this glycogen whatever is there, it was stored so much that it has destroyed the liver. ठीक है, तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा into your glucose by the help of an enzyme called as glycogen phosphorylase. ओके. सो ग्लाइकोजन पाथवे में आप तो पढ़े ही होंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस. तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इन द लिवर अगर ये एंजाइम नहीं होता है, ग्लाइकोजन लेवल विल इंक्रीज लीडिंग टू डेथ ऑफ द पर्सन एंड इंजुरी ऑफ द लिवर व्हिच लीड्स टू द डेथ. सो द आंसर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस. व्हिच सब टाइप बच्चों, क्योंकि मैंने दो चीज पढ़ाया था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इन द मसल आल्सो, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस इन द लिवर आल्सो. तो यहाँ पे तो लिवर का डिसीज है. सो लिवर डिसीज मींस दैट इज योर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम, hepatic type, that is liver glycogen phosphorylase deficiency. So if I ask you to make a diagnosis, what type of disease it is a type 6 glycogen deficiency, glycogen storage disease. तो वो कौन सी डिसीज था, मैं अभी पढ़ाया था, H for hepatic, H for Hirsch disease. The answer is Hirsch disease. So this is the story of your hepatic glycogen phosphorylase deficiency. Okay, so let's continue to the next question. All right, so the pentose phosphate pathway protects the erythrocyte against the hemolysis by assisting, okay, let's see, hemolysis by getting the assistance from, okay, अरे सिंपल सी बात है, HMP pathway. Okay, HMP pathway. So HMP pathway will give you what? HMP pathway has one enzyme G6PD बच्चों. What is that? G6PD. G6PD का रिएक्शन क्या वजह से क्या आता है? NADPH. NADPH what will it do? Yes, NADPH
रिमूव्स द फ्री रेडिकल, आज ही अभी पढ़े थे ना, रिमूव फ्री रेडिकल हाउ, ग्लूटाथाइन रेडक्टेज की वजह से, याद है ग्लूटाथाइन रेडक्टेज एंड दैट इज योर ग्लूटाथाइन पेरोक्सिडेज, रिमूव द फ्री रेडिकल, रिमूव द फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को रिमूव करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए था, G6PD। तो विच एंजाइम इज प्रोटेक्टिंग, वेरी गुड तरुण अग्रवाल, आंसर इज बी, द आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD। सो एरिथ्रोसाइट को हीमोलाइसिस से कौन बचाता है, कौन बचाता है, दैट इज योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, वेरी गुड तरुण अग्रवाल। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a 3-month-old girl is brought to the hospital due to fuzziness and lethargy. According to her parents, baby was just fine until the baby was being switched from the breast milk to baby foods. Okay, the formula and fruit juices. यहाँ पे ये मिला ना बात, तो फ्रूट जूस ऐड कर दिए, मम्मी ने जूस पिला दिया। ओके, विच जूस आई डोंट नो, आस्क हर बेबीज मदर, आई डोंट नो। ओके, at the same time, the child cried while feeding, sometimes vomited, and has been more lethargic. The baby appetite seems to be worsened. The parents thought it is only formula was used. The baby was better, okay, but they really could not remember what is the possible enzyme. They really could not remember. So they are asking us the question, which is a possible enzyme which is causing this presentation. And options are your galactokinase, fructokinase, aldolase B, and hexokinase. What is the diagnosis? Okay, so यहाँ पे देखो फ्रूट जूसेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रूट जूस। ओके, बच्चे को क्या दिया, फ्रूट जूस। ओके, सो क्या कौन सी जूस, लेट्स कीप पाइनएप्पल जूस फॉर एग्जांपल। ओके, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट सर, फ्रक्टोज। वेरी गुड डॉक्टर आदित्य यादव, द आंसर इज सी, द आंसर इज aldolase B। बट वो कैसा aldolase B हुआ मैं समझाता हूँ। वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्रक्टोज। ओके, वी हैव फ्रक्टोज। ओके, नाउ फ्रक्टोज, माय डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ fructokinase, with the help of fructokinase, it will get converted into fructose 1-phosphate. From there, this fructose 1-phosphate will get converted into fructose 6-phosphate. This fructose 6-phosphate, under the influence of an enzyme called as aldolase B, aldolase B. What is the name of the enzyme? Aldolase B. It will get converted into something called as GLAP, glyceraldehyde phosphate, and dihydroxy acetone phosphate, DHAP. Okay, वो glycolysis का pathway में आता है। Okay, so now what happens if there is a deficiency of fructokinase? अगर इसका deficiency होता है, if there is a deficiency of fructokinase, it will lead to fructosuria. It will lead to fructosuria and fructosemia. मतलब एक कोई डेंजरस कंडीशन नहीं है। सो दिस इज नॉट ए डेंजरस कंडीशन, एक्चुअली इट इज ए बिनाइन कंडीशन। बट aldolase B का डिफेक्ट होता है। इफ aldolase B डिफेक्ट, इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज HFI, hereditary fructose intolerance. Hereditary fructose intolerance. Hereditary fructose intolerance occurs because of what is a deficiency of aldolase B gene. Aldolase B gene. So actually ALT, aldolase, aldo B gene. The gene defect is aldo B gene. Because of this, aldolase B नहीं होता है, तो fructose 6-phosphate will become more and child will have a fructose intolerance. So this is a case of HFI. HFI, hereditary fructose intolerance. Okay, all right. So hope you are able to understand. Just let me once like I have this habit of confirming in the middle of whether I'm audible or not and all. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. A chronic alcoholic recently had a trouble with the ability to balance. Okay, he's having ability to balance. Balance का एक disability हो गया तो उसको क्या कहते हैं वो? Ataxia. What is that? Ataxia. Becomes easily confused. Okay, he's also having, let's keep that global confusion. What is that? Global confusion. And also he has a nystagmus. So that is basically ophthalmoplegic symptom. So this is a case of Wernicke's encephalopathy. What is that?
Wernicke's encephalopathy. Wernicke's encephalopathy occurs due to deficiency of your which vitamin? Vitamin B1. Deficiency of vitamin B1. Vitamin B1 का अगर deficiency होता है, your vitamin B1 is a coenzyme. Coenzyme for your transketolase बच्चों, that is your transketolase. Okay, thymine pyrophosphate, that is coenzyme for your transketolase. तो ऑटोमेटिकली तो उसका बायोकेमिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए we are going to check for a transketolase enzyme, and already you people know that the Wernicke's encephalopathic mnemonic GOA, global confusion, ophthalmoplegia, ataxia. Ophthalmoplegia and ataxia. Hope this part is clear. Let's go to the next question, bachcho. Which of the following is a omega-3 poly unsaturated fatty acid? Okay, so remember your fatty acids we have saturated and unsaturated. So we have most importantly unsaturated. What is that? Unsaturated. Bachcho, we will have two types, MUFA and PUFA. What is that? MUFA and PUFA, polyunsaturated fatty acid and monounsaturated fatty acid. PUFA के अंदर आता है, one of them is called as a अल्फा लेनोलेनिक एसिड. ठीक है सर, ये अल्फा ही क्यों लिखा गया था? सो एक्चुअली अल्फा इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स. ओके, तो इसलिए वो नाम दिया गया था. फर्स्ट PUFA to get into this ideology was coming from your alpha linolenic acid. So answer is alpha. ऐसा कोई नहीं होता है. There is no such thing called gamma linolenic acid. And this alpha linolenic acid बच्चों इसके अंदर और एक भी आता है PUFA के अंदर, that is your DHA डेकासोहेक्सोनिक एसिड. ये कहां पे होता है? ब्रेस्ट मिल्क से होता है. एक्चुअली स्पीकिंग DHA भी कहां से बनता है? लेनोलेनिक एसिड से ही बनता है. व्हाट इज दैट? इट कम्स फ्रॉम द लेनोलेनिक एसिड इटसेल्फ. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर व्हाट इज दैट? अल्फा लेनोलेनिक एसिड. वेरी गुड तरुण अग्रवाल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. दैट्स बी आंसर. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. The lipoprotein richest in cholesterol is, lipoprotein which is richest in cholesterol is, remember जो that is your LDL बच्चे. डायरेक्ट फैक्ट टू बी रिमेम्बर्ड. सो यहाँ पे आप लोगों को जब नोट्स दिया जाएगा तो इसमें रहेगा रिमेम्बर LDL, द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सी लाइपोप्रोटीन के अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं. 3 पॉसिबल थिंग्स, जिसके अंदर विच वन इज हायर कंपैरेटिवली इन द LDL. कोलेस्ट्रॉल इज हायर अबाउट 50%. द आंसर इज योर LDL बच्चे. LDL. तरुण अग्रवाल, आंसर इज सी. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following true statements are true about ketone body except? मतलब they are asking what is that? Which of the following is true about the ketone body except? तो मतलब हमें क्या देखना है सर? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. कीटोन सिंथेसिस इंक्रीज इन डायबिटीज मेलिटस, हम सबको पता है, ये तो सही स्टेटमेंट है. व्हाई? बिकॉज व्हाट? यस, because these synthesis of ketone bodies will lead to diabetic ketoacidosis. Okay, so they are synthesized in mitochondria. They can deplete alkali reserve. Actually they can also deplete alkali reserve diabetic ketoacidosis में. They can be oxidized in the liver. The answer usually will be B, because usually they are synthesized in cytoplasm. ठीक है. अरे ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई. कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द लिवर. ठीक है, आंसर इज बी. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A 2-month-old girl is brought to the hospital because she has been feeding poorly, okay, and had been lethargic for the past several months. The baby also started breathing more, okay, and rapidly than normal, okay, and also had a seizure. Laboratory studies reveal pH of 7.20. So there is a acidosis. And anion gap of 19 milli equivalent. 19 milli. Normal anion gap होता है, normal anion gap which can be vary from 18 to 16 milli equivalents. Normal anion gap can vary from 18 to
16. Okay. Elevated level of lactate and alanine. दो चीज बढ़ा हुआ है, lactate and alanine. Which enzyme deficiency causes it? तो चलिए देखते हैं. Normally you have your glucose. Glucose will get converted into pyruvate. Glucose will get converted into pyruvate. Tarun Agarwal, you are absolutely correct. So the answer is D only. But हम लोग डिस्कस करते हैं कैसा हुआ. Glucose will get converted into pyruvate. Normally pyruvate किस चीज में कन्वर्ट होता है? Into acetyl CoA. into acetyl coenzyme A. So उसके लिए कौन सी एंजाइम चाहिए होता है? Pyruvate dehydrogenase. So Tarun Agarwal, for the previous question I'm telling, previous question also I'm telling the answer is B, and इसके लिए भी D नहीं होता है. So इसके लिए pyruvate to acetyl CoA, pyruvate to acetyl CoA, we require pyruvate dehydrogenase. Okay, if there is no pyruvate dehydrogenase, all this pyruvate, because of the lactate dehydrogenase, it will get converted into lactate. Okay, so the question is not asked which enzyme is causing this problem. They asked kaun si enzyme deficiency. Pyruvate dehydrogenase is not there, because of that pyruvate is get converted into lactate. Okay, so the answer is deficiency is pyruvate dehydrogenase complex. अगर इसी चीज को अगर आपको ध्यान से देखा जाएगा, which enzyme causes the increase of lactate, then lactate dehydrogenase. Okay, confusion नहीं होने का है. This is a simple story बच्चों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. In the protein, alpha helix and beta plated sheet are an example of. यहाँ पे दो चीज होता है, alpha helix भी है, beta plated sheet. If two things are there, remember it is a secondary structure of the protein. सर ये secondary structure क्या होता है? यहाँ पे एक image डाला हुआ है मैंने, इस चीज से समझ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक प्रोटीन बनता है, whenever there is a protein, it's as simple as that long chain of amino acid. सिर्फ there is a long chain of amino acid like this. One amino acid another, one amino acid another, एक के साथ ऐसा जुड़ते चला गया. Then we will call it as what? Then we will call it as a primary protein. मतलब जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है. Okay, then we will have what is that? If we have multiple chains, मतलब दो चेन से साथ में आ गया, for example alpha helix and beta plated sheet, then we will call it as a secondary protein. अगर उसी चीज को आपने फोल्ड कर दिया 3-dimensional, we will call it as a tertiary protein. ओके, अगर इसी के अंदर प्लीज अंडरस्टैंड, इसी स्ट्रक्चर को इवन मोर कॉम्प्लेक्स अगर फोल्ड कर दिए सिंपल सी, देन वी विल कॉल इट एज ए टर्शियरी. इवन मोर कॉम्प्लेक्स वी विल कॉल इट एज ए क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. मतलब प्राइमरी से लेके क्वाटरनरी तक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इंक्रीजेस. प्राइमरी सिंपल होता है, क्वाटरनरी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. सिंपल, डन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिप्टोफैन could be considered as a precursor of. ऑप्शन देखते हैं, मेलाटोनिन, थायराइड हार्मोन, मेलानिन एंड एपिनेफ्रिन. देखो थायराइड हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन से. ओके, मेलानिन किससे बनता है? टायरोसिन से. एपिनेफ्रिन किससे बनता है? टायरोसिन से. सो ओनली लेफ्ट आउट ऑप्शन इज मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड विटामिन B3, दैट इज नायासिन. सो ट्रिप्टोफैन से तीन चीज बनता है. ऑलरेडी मेलाटोनिन इज देयर, 5-HT, दैट इज सेरोटोनिन व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आल्सो इट विल फॉर्म योर नायासिन. सो दीज आर द रोल ऑफ योर ट्रिप्टोफैन. ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस हैज बीन एडेड इनटू योर टेस्ट बिकॉज़ दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. एंड एवरी टाइम टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद जितने भी कॉन्फिडेंट हो ना, वहां जाने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन आने लगता है. अब इसे क्लियर कर लो. ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन. मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड बाय टायरोसिन बच्चों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Amino acid involved in the synthesis of creatine are. Amino acid involved in the synthesis of creatine are. कौन सी ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जो क्रिएटिन के अंदर इन्वॉल्व होता है? सो पहले समझते हैं व्हाट इज क्रिएटिन. क्रिएटिन इज अ टाइप ऑफ ट्राइपेप्टाइड बच्चों. व्हाट इज दैट? इट इज अ टाइप ऑफ ट्राइपेप्टाइड. ट्राइपेप्टाइड मींस 3 amino acid. What is that? 3 amino acid. Okay, so what are those? Okay, so it consists of glycine. Okay, it will also consist of alanine, and also it will consist of methionine. What is that? Methionine. Okay, so let's look. So glycine, okay, is there. Alanine, arginine, no.
Okay, wow, और कौन सी है? Let's see. So we have, what is that? So it's not alanine, sorry, arginine, glycine, arginine and methionine. Arginine and methionine. Okay, sorry, I'm sorry, glycine, arginine and methionine. Okay, so और कौन सी है? Glycine, arginine, methionine, arginine, alanine, glycine, glycine, alanine, lysine, methionine, arginine, lysine, methionine. आंसर इज ग्लाइसिन, arginine, methionine. इसको याद रखो, ऐसा एक निमोनिक देता हूं. एक निमोनिक है क्रिएटिव गेम, क्रिएटिव गेम. ओके, एक कैसा याद रखे सर? क्रिएटिव फॉर क्रिएटिन, जी फॉर ग्लाइसिन, G for glycine. Very good. A is correct answer. Okay. A for arginine. A for arginine. Me for methionine. Okay. Me for methionine. Okay. So this is the story of your, what is that? That is creatine. Creatine is responsible for the muscle का energy source के लिए, बच्चों किसके लिए? Energy source के लिए. ठीक है? Hope you understood that. Let's continue to the next question. All right. A patient with a BMI of 25, okay, has had a history of elevated cholesterol. A cholesterol देखो 300, 300 is a very high, with a normal triglyceride level, and HDL level has been reduced. So remember, normal triglycerides, okay, and also decrease of HDL. Normal HDL होता है above and equal to 60. Normal HDL level is above and equal to 60. On bilateral, on examination, Achilles tendon, there is a xanthoma was present. Okay, xanthoma was present. Okay, xanthoma means what is that? So there is a lot of fat deposition which is converted into type of lipoma. Okay, treatment was statin. Statin diye to cholesterol came up to 180. The patient father had a similar history and he died of heart attack in 48 only. Potential mutation will be. So this is what this is. First understand, there is a increase of cholesterol. There is a increase of cholesterol, and also there is a decrease of HDL. Decrease of HDL. It is a high likely. It is a type of type 2 hyperlipidemia. Type 2 hyperlipoproteinemia, familial hyperlipoproteinemia, familial hyperlipoproteinemia. So familial hyperlipoproteinemia बच्चों टाइप 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, HDL कम होता है, and also there can be increase of VLDL. Increase of VLDL, specifically speaking, especially in type 2B. टाइप 2 के अंदर दो तरीके होता है, टाइप 2 एंड टाइप 2B. सो इन द टाइप 2B, सो इन टाइप 2 सीधा याद रखो, टाइप 2 इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ LDL receptor. डिफेक्ट ऑफ LDL receptor. LDLR means LDL receptor. LDL receptor का डिफेक्ट को कहते हो टाइप 2 हाइपर lipoproteinemia. So LDL receptors कहाँ पे होते हैं सर? So they are located on the liver बच्चों. Where they are located? Liver. Where they are located? Liver. ठीक है? So the answer is LDL receptor. So if you given for the answer for the 38th question, you're absolutely correct Tarun Agarwal. The answer is LDL receptor. तो आप लोगों को बाद में भी देखने के लिए I have added a table ताकि when you go through the notes, it easy for you people. Okay? All right. You have an elderly patient with a history of heart attack, मतलब recurrent myocardial infarction and cerebrovascular accident. Blood work indicates elevated homocysteine level. There is an increased level of homocysteine level, which is reduced by taking the pharmacological doses of pyridoxine, that is your B6, folate, that is your B9, and methylcobalamin, an enzyme that would benefit from the treatment in lowering the homocysteine level is which of the following? Okay, तो इसको आंसर करने से पहले I'll explain you this concept very quickly so it will be easy for you. Okay, so normally my dear students, we have something called as a sulfur containing amino acid. Which amino acid? Sulfur containing amino acid. कौन से amino acid? Sulfur containing amino acid. So sulfur containing amino acid, we have something called as methionine. We have something called as methionine. ये methionine किसमें convert होता है? He'll get converted into SAM. What is that? Yes, adenosyl methionine. Yes, adenosyl methionine will get converted into something called as yes, adenosyl homocysteine. Homocysteine. Okay, sir, क्यों
क्यों कन्वर्ट होता है? बिकॉज इट विल डोनेट मिथाइल ग्रुप। पूरा बॉडी का, फॉर होल बॉडी मिथाइल का मेजर सोर्स कौन है? सैम भैया। कौन है? सैम अंकल। सैम चाचा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिथाइल ग्रुप। सो फॉर एनी प्रोसेस, नॉर एड्रेनलिन टू एड्रेनलिन, अगर कोई और कुछ कोलिनेशन कुछ भी होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए, ले लो भैया। कौन को दे देता है? सैम। ओके, दिस होमोसिस्टीन SAM will get converted into homocysteine। बच्चों किसमें कन्वर्ट होता है? होमोसिस्टीन। ओके, अब होमोसिस्टीन should get converted into methionine। ओके, सो बेसिकली होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा? वी नीड टू ऐड मिथाइल ग्रुप। व्हाट इज दैट? मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। ठीक है, सो टू ऐड दिस CH3 ग्रुप, CH3 का सोर्स होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब जो फूड से आप फोलिक एसिड लेते हो, विटामिन B9, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करता है? मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, किसको? होमोसिस्टीन को। ठीक है, सो ये मिथाइल को ट्रांसफर करने के लिए वी रिक्वायर homocysteine methyl transferase। We require which enzyme? Homocysteine methyl transferase is the enzyme which is required। So ये homocysteine methyl transferase का coenzyme, the coenzyme of this one is your B9। Coenzyme is your B12, I'm sorry। So methyl tetrahydrofolate, this is your B9 and this is your B12। So B12 is required for the function of this enzyme homocysteine methyl transferase। So when you give B9, B12 and pyridoxine together, it will help the function of homocysteine methyl transferase। The answer is A, absolutely correct। So homocysteine methyl transferase। Let's go to the next question बच्चों। The dietary history corresponding to the following clinical presentation। यहाँ पे देखो चाचा को, देखो चाचा क्या हुआ? What is happening to this uncle जी? यहाँ पे तो देखो what is happening। So the patient is having a casal necklace। What is there? Casal necklace। What is there? Casal necklace। So casal necklace is due to which disease? Pellagra is due to which disease? Pellagra। So pellagra is due to deficiency of niacin deficiency। So niacin deficiency if it is there, so ध्यान से देखो, niacin is produced from, B3 is produced from your tryptophan, from your tryptophan। and tryptophan is a lack, it lacks where, काम पे किस चीज में कम होता है? in which of the food items tryptophan is less? बच्चों बताओ, tryptophan is less in which of the following? Tryptophan is less in, yes, less in, very important, corn or maize based diet, corn or maize based diet। So the answer is corn based diet with a low tryptophan level। Pure vegan तो वो क्या होना चाहिए? The person should be lacking B12, तो that should be vitamin B12 deficiency होना चाहिए with the symptoms of anemia। Answer is B, absolutely correct answer Tarun Agarwal। Let's go to the next question, the 48th question। ठीक है, आप आपका 46वां प्रश्न में पहुंच गए। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ए 40-year-old woman presents with a tingling sensation in both hands and legs। Examination she found to have a fissured magenta tongue, okay, lesions at the angles of the mouth, peripheral neuropathy, decreased of glutathione reductase activity। Already we have discussed this, glutathione reductase and angles of the mouth। अगर ये आएगा तो what will be the deficiency of which enzyme? Cheleosis। Cheleosis is caused by the deficiency of which enzyme? Maro, answer is riboflavin sir ji। What is the answer? Riboflavin। What is answer? Riboflavin। Okay, riboflavin is called as B2। B2 deficiency leads to what is that? Leads to cheleosis। बच्चों क्या होता है? Cheleosis and also decreased activity of glutathione reductase। तो glutathione reductase कम होने के, एक्टिविटी कम हो जाएगा, where exactly? In the RBC। तो RBC के अंदर glutathione enzyme का coenzyme is your riboflavin। Riboflavin is what? Flavin dependent flavinamide, that is your vitamin B2 B12। okay, so that is only your 40th question। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलो
Leishman syndrome, the sex-linked recessive. Sex-linked basically, yes, it is a sex chromosome linked. It is due to X chromosome linked disease. X-linked recessive disorder is due to lack of which enzyme? To see the question, Leishman syndrome. Leishman syndrome is a condition जिसके अंदर there is an increase of uric acid. Increase of uric acid due to what? Due to increased breakdown of purines. Due to increased breakdown of purines. Increased breakdown of purines. Because of what? That happens because of deficiency of one enzyme. Deficiency of Leishman is due to deficiency of, बच्चों जल्दी बताओ, what is that? Options are option A HGPRT, option B xanthine oxidase, adenyl phosphoribosyl transferase, adenosine deaminase. अच्छा ये बता दो आंसर. The answer is what? Leishman syndrome is due to deficiency of which enzyme? It is due to deficiency of hypoxanthine guanine phosphoribosylase. The Leishman syndrome is due to deficiency of HGPRT, deficiency of HGPRT enzyme. So this is a disease जिसके अंदर बच्चों को क्या होता है? Biting their own nails, biting their own lips, psychomotor agitation, mental disability, learning difficulty, hyperreflexia. All of these are present as a result of hyperuricemia. So this is your क्वेश्चन 41. आई थिंक एडिटिंग में गलत हुआ होगा. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई विल लुक इनटू दैट क्वेश्चन. डोंट वरी. सो दैट 41st क्वेश्चन विल डू इट एट द एंड. डोंट वरी. ओके, वो कहीं छूटेगा नहीं. ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, कोई कुछ नहीं छूटेगा. ठीक है. सो द आंसर इज HGPRT. ओके, chalo. Leishman syndrome is due to deficiency of HGPRT, self-mutilation, and this is a condition where there is a biting of own nails. Even nail beds को bite कर लेते बच्चे, lips को bite कर लेंगे, and also they damage themselves. So this is the Leishman syndrome. ठीक है sir? चलो, let's go to the next one. Sterilized milk lacks in. तो ये सीधी बात है, sterilized milk के अंदर vitamin C नहीं होता. सीधी सी बात है. There is no argument here. So sterilized milk does not have, that is your vitamin C. Does not have your vitamin C. Okay. Let's go to the next question. Okay, poor wound healing, acrodermatitis enteropathica, decreased taste sensation due to defective absorption of which of the following? Manganese, molybdenum, iodine, and zinc. Okay, acrodermatitis enteropathica, and poor wound healing. These are the classic deficiency of one mineral, deficiency of micronutrient called as, come on बच्चों बता दो, micronutrient called as, that is your which one? Zinc बच्चों. Which one? Zinc का deficiency. Because of the lack of zinc, answer is your lack of zinc will lead to deficiency, or they are called as, leads to acrodermatitis enteropathica and poor wound healing. Okay, चलिए बढ़ते हैं. Let's go to the 45th question. Which of the following is correctly matched? Okay, options देखते हैं. So selenium deficiency Cation disease, copper deficiency Wilson disease, chromium glucose tolerance factor, zinc coenzyme for alcohol dehydrogenase. पहले तो ध्यान से देखो, ये जिंक कोएंजाइम कब से बनने लगा? हाँ, ये जिंक तो क्या होता है? कोफैक्टर होता है. सो इट इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हेल्पिंग एनी एंजाइम, इट इज ए कोफैक्टर. पहले तो ये उड़ गया आंसर. ठीक है. Chromium has nothing to do with the glucose. Copper deficiency does not cause Wilton disease. It will cause, yes, Menkes disease, ATP7A. It is a Menkes disease, ATP7A. So selenium deficiency causes Cation disease. Cation disease is a type of cardiomyopathy. कार्डियोमायोपैथी. सो इसी को क्या बोलते हो? केशन कार्डियोमायोपैथी. क्या बोलते हो बच्चों? केशन कार्डियोमायोपैथी विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेलेनियम डेफिशिएंसी. ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार FMGE में पूछा हुआ है, नीट में पूछा है, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. ओके, इट कम्स फ्रॉम ईदर साइड. इट कम्स फ्रॉम ईदर फ्रॉम पीडियाट्रिक्स और इट कम्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एज वेल. ओके, बायोकेमिस्ट्री से भी आ सकता है, बायोकेमिस्ट्री एज वेल आल्सो. ठीक है, चलो. Xeroderma pigmentosum is due to impaired DNA repair of the following type. Okay, तो पहले Xeroderma pigmentosum occurs due to what? Occurs due to UV rays. ठीक है, UV rays की वजह से होता है. Okay, so this is only your Xeroderma pigmentosum.
Okay, so when UV rays के वजह से, when there is a UV rays which are causing, I think ओके, इफ इट इज रॉन्गली मार्क्ड इन द की, बच्चों देखो कभी कभी हो जाता है सब, ठीक है, तो हम लोग इसीलिए बैठे रहते हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्या होगा, कभी क्या होता है कि ये आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, ठीक है, मतलब आगे पीछे जितने भी हो हम लोग रहते हैं कि अगर वो आंसर की में कोई गलत टाइपिंग भी आ गया, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग फैकल्टी लोग रहेंगे, आपको क्लियर करते रहेंगे, डू नॉट वरी। ओके शायद, ठीक है, चलिए। तो यूवी रेस क्या करता है, डीएनएस को डैमेज कर देता है, यूवी रेस क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है, सो यूवी रेस विल कॉज द डैमेज ऑफ द डीएनए। तो 45D इज करेक्ट। अरे बाब, अरे बच्चों देखो यहाँ पे जिंक कोएंजाइम नहीं हो सकता है, कोएंजाइम कैसा होगा, है कि नहीं? करेक्टली मैच किया, सेलेनियम, कैल्शियम, कार्डियोमायोपैथी बच्चों, ठीक है, जिंक कोएंजाइम हो ही नहीं सकता, को फैक्टर होता है वो, ठीक है, को फैक्टर होता है, ठीक है, कोएंजाइम हो ही नहीं सकता। कोएंजाइम्स आर ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चों, कंफ्यूज मत होना तरुण, ठीक है, अगर एंजाइम को मदद करने के लिए कोई विटामिन आ गया, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस आया, उसको बोलते हैं आप कोएंजाइम। अगर नहीं है तो को फैक्टर, अगर की में गलत मार्क किया होगा तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। I'm going back to the 45th question. Selenium deficiency causes cation cardiomyopathy. Copper deficiency causes Menkes disease. Chromium has nothing to do with glucose factor, and zinc is not a coenzyme, bacha. Zinc is a cofactor. Please do not get confused. Okay, zinc is a cofactor, bacho, cofactor. Okay. Hope it is clear. Let's go to the 46th question. ड्यू टू यूवी रेस डीएनए डैमेज होगा, बिकॉज ऑफ दैट क्या आएगा, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो इसको रिपेयर करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर बोलते हैं। सो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर शुड हैपन। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर नहीं होता है, इट लीड टू जेरोडर्मा nucleotide excision. If that is not happening, so then what will happen, so it is due to nucleotide excision repair, तो उसके वजह से क्या होता है, so that will be nucleotide excision repair के impairment की वजह से xeroderma pigmentosum, ठीक है। तो confused between cofactor and coenzyme कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझा देंगे आप, ठीक है, कोई सिंपल बात है। यहाँ पे एक एंजाइम है भाई, here we have a enzyme, ठीक है, here we have a enzyme, here also I have a enzyme, ठीक है, here also I have one more enzyme. So for this enzyme to work, ये एंजाइम को काम करने के लिए मुझे चाहिए था विटामिन B6। ओके, दिस इज एंजाइम ए। सो एंजाइम ए को काम करने के लिए क्या चाहिए था, विटामिन B6। यहाँ पे एक था एंजाइम बी, इसको काम करने के लिए चाहिए था जिंक, इसको काम करने के लिए चाहिए था कौन था, जिंक। So if zinc is helping the enzyme, then it will become a cofactor. Why cofactor? Because zinc is a inorganic substance, ठीक है। अगर एंजाइम ए को काम करने के लिए विटामिन B6 चाहिए था बच्चा, विटामिन B6 इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हेल्प कर रहा है, then it is called as coenzyme. ओके, लेट्स टेक तीसरा सिनेरियो, एक एंजाइम था, एंजाइम के अंदर ही विद इन द एंजाइम कोई आयरन था, ये काम पे है विद इन द एंजाइम, ये काम पे है विद इन द एंजाइम इटसेल्फ, एंजाइम के अंदर ही कौन है, आयरन है। एंजाइम के अंदर अगर कोई सब्सटेंस होता है, कोई भी हो सकता है, विद इन द एंजाइम इफ समथिंग इज देयर, इसको बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको बोलते हो प्रोस्थेटिक। कंफ्यूजन मिट गई, क्लियर हो गया तरुण, ठीक है, इसको बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मदद करने के लिए बाहर से आएगा कोएंजाइम, अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मदद करने के लिए बाहर से आएगा कोफैक्टर, अगर एंजाइम के अंदर ही कुछ और है, देन इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो इफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम्स फ्रॉम सेपरेटली एंड हेल्प्स द एंजाइम, कोएंजाइम, if inorganic substance comes and helps the enzyme, then cofactor, if the something substance which is present within the enzyme called as prosthetic group। ये तीनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
So, sphingolipidosis present in the hepatosplenomegaly and cherry red spot. Cherry red spot कहाँ पे होता है? Actually, cherry red spot in the eye बच्चे. Okay, so cherry red spot in the eye hepatosplenomegaly. कौन सी lipids है? Sphingolipids. So, sphingolipids. So we have something called as sphingolipids. What is that? Sphingolipid. Yes, sphingolipids are a type of what? Sphingolipids are a type of phospholipids. बच्चों क्या होता है? Phospholipids. What are they? Phospholipids. So these sphingolipids are metabolized into their products by an enzyme called as sphingomyelinase. What is that called as? Sphingomyelinase. Sphingomyelinase. So sphingomyelinase, if there is a deficiency, then my dear students, it will lead to a disease called as Niemann-Pick's disease. What is that? Niemann-Pick's disease. What is that? Niemann-Pick's disease. Niemann-Pick's disease. So the answer is B. Sphingomyelin ज़्यादा हो गया तो that is only called as Niemann-Pick's disease. बच्चे क्या बोलते हैं उसको? Niemann-Pick's disease. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. Not a inhibitor of complex 4. बढ़िया complex 4 होता है कहाँ पे सर? Electron transport chain. Okay, so complex 4 का inhibitor का list बताता हूँ, याद रख लो. 2 C's. Okay, what are the 2 C's? One is carbon monoxide, one more is cyanide. ये तो सबको याद होता है. Apart from that, electron transport chain, that is complex 4, can also be inhibited by your hydrogen sulfide. Okay, and there is one more industrial or which is not a medically used chemical, that is your azides also. 2 C's and a HA. Okay, so these are your, what is that? That is your electron transport chain 4 का inhibitor. So the answer is antimycin, which is not पूछा गया है. कौन सी नहीं है? कौन सी which is not the inhibitor? The answer is antimycin. बच्चों, what is that? Antimycin. ठीक है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो सोडियम अजाइड करके आते हैं. सोडियम अजाइड ये एयरबैग्स वगैरह में यूज करते हैं. एक्चुअली एयरबैग्स वगैरह में मतलब सोडियम अजाइड डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. सो एयरबैग्स को मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे दैट विल बी वेरी यूजफुल. सोडियम अजाइड करके यूज होता है. दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 4 inhibitor. Which of the following enzyme activity decreases in fasting? ठीक है. Okay, so the answers are, the enzymes are, what are the enzymes? Hormone sensitive lipase, glycogen phosphorylase, pyruvate carboxylase, phosphofructokinase. Okay, चलो आंसर बता दो इसका. देखते हैं. टेल मी द आंसर. जल्दी बताओ. So actually fasting में हो तो automatically your lipids will start to break down. So automatically lipoprotein lipase तो बढ़ेगा activity, क्योंकि energy चाहिए. lipoprotein lipase will break the free fatty acids. Okay, glycogen phosphorylase, again my dear students, what is that? This will also plays a role. Where exactly बच्चों? This will also plays a role in production of glucose by breaking the glycogen. Phosphofructokinase will also will be active. The answer will be pyruvate carboxylase. So pyruvate carboxylase करता क्या है? Actually it will convert acetyl CoA. Pyruvate carboxylase normally it will convert acetyl CoA into oxaloacetate. Okay, so this is the story of your 49th question. Let's go to the last question. The last question is, which of the following vitamin enhances the iron absorption? तो iron absorption के लिए याद रखो, which vitamin increases the iron absorption? Vitamin C. The name of the vitamin is ascorbic acid. What is that? Ascorbic acid. What is that? Ascorbic acid. So iron absorption कब बढ़ेगा? Iron absorption will be increased in any of the acidic environment. Iron absorption will be increased. Enhanced iron absorption in a acidic environment. The better absorption of, what is that? Better absorption of iron. That is vitamin C. Vitamin C. Okay, so let me open the question. तो 41st क्वेश्चन वाज मिस्ड है ना. तो 41st क्वेश्चन को भी ठीक कर देते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट मी लुक एट द क्वेश्चन.
इसको क्या हो गया, 41st क्वेश्चन कहां से नहीं आया, हेडिंग में गायब हो गया. Okay, so the 41st question is vitamin B12 deficiency. B12, sorry. So what is the question? B12 deficiency causes all of the following except. मतलब B12 deficiency के अंदर क्या क्या दिख सकता है except. Option A दिया हुआ है. What is the option A? So that is subacute combined degeneration of the cord, degeneration of the cord मतलब spinal cord. Option B देखते बच्चों, what is given? Megaloblastic anemia, of course, megaloblastic anemia. Okay, then option C क्या दिया हुआ है? Let's look at folate trap. Okay, what is that? Folate trap. Okay, option 4 will be given as, what is that? That was given as, what is that? Decrease of methyl malonyl coenzyme A. Okay, so what is the answer? Okay, so देखो vitamin B12 is responsible for the myelination of the neuron. Let me open the comment box. I taken the question, so let me open the comment box ताकि आप लोगों से बात कर सको. तो देखो so what is that? So whenever there is a myelin is there, myelin क्या होता है? Myelin is the covering which is present. अगर B12 कम होता है, myelin का प्रोडक्शन कम हो जाता है. B12 कम हो जाएगा तो myelin का प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा. If myelin production is not there, automatically क्या हो जाएगा? Definitely degeneration of the spinal cord definitely होगा. Megaloblastic anemia definitely होगा. Folate trap definitely होगा. Folate trap is nothing but methyl tetrahydrofolate में रह जाएगा. So methyl tetrahydrofolate B12 deficiency causes folate trap. Directly याद रखो, fact based है ये. So the answer will be decreased of methyl malonyl CoA. The answer is D बच्चों. The 41st question is discussed. Okay, अगर कोई ऐसा कुछ आंसर की में आगे पीछे मार्क किया हुआ है तो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस हैपेंस, कभी टाइपिंग एरर्स हो जाता है. होप आप लोगों को बायोकेम का टेस्ट डिस्कशन का सेशन मजा आया हो. सो if you have any doubts you can ask me, और कुछ ये तो any other confusions also you can talk to me, no problem. So if at all you want to like अगर तुम्हें बायोकेम हो, फार्मा हो, अगर कुछ डाउट आता है, if you want to get into touch with me, you can get into touch with me. So you can get into touch with me on Instagram, Telegram, anywhere, and you can ask your doubt. We'll help you out with it. So hopefully आपको टेस्ट एंड डिस्कशन you enjoyed it. तो अभी तो बात कर लो यार, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ये तो बात कर लो. ये भी नहीं बताना है क्या? अरे सर हो गया बस, अब 10 बज गया, अब खाना मतलब भूख लगी है, गौतम नगर में मतलब परांठे मिल जाएगा, परांठे फेलना है ना, ऐसा कुछ है. तो दिस वाज ए वेरी लाइक सी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन. तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम डिटो पैटर्न में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो दिस है मॉडिफाइड एंड इम्प्रोवाइज्ड क्वेश्चंस. तो आप लोगों को बहुत मदद करेगा, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिटो डिटो आते हैं. ओके, सो डेफिनेटली बच्चों, मेरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, सो आप लोगों को चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी. अगर चाहिए तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आई थिंक मतलब मेरा यूट्यूब चैनल से आएगा ये, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल का नाम से आएगा बेसिकली. सो दैट्स माय कांटेक्ट. इफ यू गेट एनी डाउट्स एटसेट्रा यू कैन कांटेक्ट मी. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो. सी योर डेडिकेशन शुड बी लाइक कुछ तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसा स्ट्रांगली बैठे रहना चाहिए. ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. जाओ आप लोग आराम से डिनर कर लो. डिनर कर लो ना, आप लोगों को नोट्स आ जाएगा सुबह तक. ठीक है, आई विल शेयर इट विद द टीम, तो टीम आपको नोट्स भिजवा देगी. ठीक है, जो भी मैं TND करवाया हूँ. ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, दस्विदानिया, स्पकोइन नोचे, शुभ रात्रि, बाय गाइस.